Love your enemies and do unto others as you would have done unto you. May this year be more promising than the year before. Spread the happiness all around you. It's Christmas and Merry Christmas to you all and my dear students' family. We feel honored to have with us our director, ma'am. Ma'am, you made all us proud by your distinguished work and numerous capacities. A woman of distinct vision and a fountainhead of innovative ideas. Thank you, ma'am. Our heart all mans with joy to have with us our chairperson, sir. Sir, you are an idol of knowledge and experience and inspiration to all of us. We welcome you to the special day. It gives me an immense pleasure to welcome our respected principal ma'am and principal sir to this auspicious occasion. Now proceeding further, first of all we have our lamp lighting program. Dear teachers and students, we are about to commence our event by the lighting of the lamp of knowledge and wisdom. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and igniting of thoughts and enlightenment. It's our honor to invite our respected director sir, chairman sir, director ma'am and principal sir and ma'am on the stage to do the honor. We deeply appreciate their presence, marking the auspicious beginning of our proceedings today. Anju ma'am, please come on the stage. दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदं द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते या कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषचार्यापहां शुक्लां ब्रह्मविचारसारे परमां आदं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं
पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम् A heartfelt thanks to our esteemed sir and ma'am for leading this auspicious beginning as the lamp lights continues to radiate throughout the day. Let us remind us of our collective commitment of knowledge, harmony and progress. Today our special guests are our chairperson sir, chairperson ma'am, director ma'am. Our heart overwhelms with joy to have with us our chairperson sir and ma'am. You are an ideal of knowledge and experience and inspiration to all of us. We welcome you to the special day. Our director ma'am, we feel honored to have with us. You made all of us proud by your distinguished work and are women of distinct vision and fountainhead of illuminating ideas. Today was the day when our Lord, our Savior, our Jesus Christ was born in Bethlehem. Now, I welcome student of class 8B, Harshita, will tell you more about this special occasion. Let's put your hands together and welcome her on the stage. शुभ प्रभात आदरणीय मंच में हर्षिता कक्षा 8वीं की छात्रा आज इस पवन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार है। क्रिसमस ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बच्चे इस त्योहार का बहुत इंतजार करते हैं। क्रिसमस के दिन घरों में रंग बिरंगी लाइट्स और सितारों से सजाया जाता है। सबसे खास क्रिसमस ट्री होता है। यह हरी पाइन के ट्री पर लाइट, गुब्बारे और चमकीले सितारे लगाए जाते हैं। बच्चे क्रिसमस ट्री के नीचे उपहार रखते हैं। सेंटा क्लॉज आते हैं, लाल कपड़े पहनकर आते हैं। उनके पास सफ़ेद दाढ़ी और बड़ा थैला होता है। वे बच्चों को उपहार देते हैं। बच्चे सेंटा क्लॉज के लिए चिट्ठियाँ लिखते हैं। क्रिसमस पर केक काटा जाता है, गिफ्ट खोले जाते हैं, सब मिलकर गाने गाते हैं, चर्च में प्रार्थना की जाती है। क्रिसमस हमें प्यार, शांति और दया का संदेश देता है। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि हमें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए और सभी के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। आइए इस क्रिसमस हम सब मिलकर दूसरों की मदद करें और इसे खुशी से बनाएं। धन्यवाद। Wow, what a golden words she has told us about this auspicious day. I request all the teachers to please have your seats. Now proceeding further and adding light to our day, now I would like to welcome our student of class nursery and LKG. Little stars are ready for their performance. It's time to see some tiny toes. Please put your hands together for our youngest performers on the song Jingle Bell. Everybody put a great round of applause for these little toes, everyone.
are the future of our nation. The song performance was done by our respected Monica ma'am. Now I request all the teachers to please have one photograph with their students. Students, you have to show your presence by clapping your hands loudly and put a great round of applause for these wonderful stars. Now it's time to proceeding further. Today we have a bunch of talented creative kids who all are set to dazzle us with their amazing costumes. Let us give them a big round of applause and cheer them, the students of class nursery and LKG, and let's make them feel special and encouraged. Welcome them for their fancy dress. Participants of fancy dress competition are here of nursery class and LKG class. These are the students of class nursery, LKGA, LKGB and UKGA and UKGB. Let's make them feel special and encouraged. Please put a great round of applause for these wonderful stars. These are the students of class nursery. Put a great wow! See their costume, they are looking so beautiful. The girls are very and boys are very handsome. Very nice costume they all wear today for this auspicious occasion of Christmas celebration. Very nice. Cheer them loudly, cheer them and encourage them. Students and teachers, I request all of you to put a great round of applause for these wonderful students and very nice, very nice. These are the students of class nursery with their class teacher Suman Datika ma'am. They are giving their immense performance on the special occasion of Christmas celebration. Cheer them loudly so they can get confidence in performing on the stage. Cheer them loudly. Students, cheer them loudly, loudly. Put a great round of applause for these wonderful stars. Don't shout, don't hoot. No hooting is allowed here. Now put a great round of applause for class UKG. These are the students of class LKGA. LKGA girls and boys, today they wear a very beautiful costume for this auspicious occasion of Christmas celebration. Put a great round of applause, girls and boys. Raise your hands and clap it loudly. Raise your hands, everyone. Raise your hands up. Very nice. Raise your hands up and clap it loudly. Boys from this side, boys. Very nice, very nice. These are the students of class LKGB, leading by our Monica ma'am and Sunita ma'am. Sunita Kabar ma'am and Monica ma'am are leading these students of class LKGA and LKGB. Your hands should not stop. Loudly raise your hands and loudly. Very nice. Wow, what a mesmerizing performance. Our little stars and kids, they just
Boys and girls, I want you to keep silence and enjoy the performance of the students performed by these little stars of our school. Now, क्रिसमस का त्योहार आया है, खुशियों की बहार लाया है, मिलकर मनाएं हम सब, प्यार और भाईचारा फैलाएं हम सब। इसी के साथ मैं मंच पर स्वागत करना चाहूँगी हमारे आदरणीय चेयरपर्सन सर का, श्रीमान सचिन सर, प्लीज come and honor the stage with your golden words. Christmas is a global festival celebrating the birth of Jesus Christ. It's time for the joy, giving and togetherness marked by traditions like decorating trees, exchanging gifts and spreading kindness. Now I would like to welcome our sir and to say some golden words for this auspicious occasion of Christmas celebration. Put a great round of applause for our chairperson sir. Welcome sir. Our respected principal sir, principal ma'am, esteemed faculties and staff members, Merry Christmas to everybody. Today, I feel very delighted to speak about Christmas Day. It is one of the most loved festivals in the world. Christmas is celebrated every year on 25th of December to remember the birth of Jesus Christ, who taught people about the values of love, kindness, forgiveness and peace. Jesus Christ was born more than 2000 years ago in a small town called Bethlehem, and which is located in West Bank. It was Palestinian territory at some time, near Jerusalem city. It is capital of Israel. Capital of Israel is Jerusalem city. According to history, he was born in a stable, and his birth showed the greatness. His birth showed that greatness doesn't come from wealth, but from good thoughts and good actions. His teachings inspire millions of people even today. Christmas is celebrated with great joy in many countries like India, USA, UK, Australia, and many parts of Europe. In India, it is gazetted holiday, and people from all religions take part in the celebrations. Churches are decorated with lights, bells and stars. Special prayers are held at midnight, known as midnight mass. One of the most exciting parts of the Christmas is Santa Claus. Children believe that Santa brings gifts for those who behave well throughout the year. People decorate Christmas trees, exchange gifts, bake cakes and sing Christmas carols. Homes and streets look bright and beautiful during this festival. So I wish that Almighty always bestow His blessing on you. Thank you and have a wonderful Wednesday. Thank you sir for your sharing your golden words for us on this special day of Christmas. Our chairperson sir, a genius as a man who has a great innovation of being unique in different ways and is a great motivator for the young minds, always encourages the students and folks to reach the greater heights. Thank you sir for golden words. That was indeed motivating and extremely informative speech. Now I would like to invite the students of class UKG for their marvelous performance on the stage. खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी. खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी. हम यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी. यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी. Now get ready for some Christmas fun and joy. We warmly invite the adorable students of class UKG to come on the stage and spread happiness with their Christmas dance. Put a big round of applause for our little stars. Put a big round of applause for these wonderful students of class UKG. These are the students of class UKG A and UKG B.
led by our respected teachers, Monica ma'am and Sunita Kavar ma'am. UKG and LKG to show their performance as they have dressed for this very nice fancy dress. Very nice. Welcome them with a great round of applause, everyone. Put a great round of applause, boys and girls. आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए बिल्कुल भी. जोर से स्वागत करिए इन प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सितारों का. देखिए आपके लिए कितने सुंदर कृष्णा जी आए हैं. Put a great round of applause, everyone. Raise your hands and clap them loudly. Raise your hands, everyone. Very nice. While sitting on the dance, please encourage the students. Girls and boys sitting in the dance, please encourage the students of class first and second. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. जोर से तालियां बजाएंगे और इन बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ाएंगे आप सभी. Very nice performance by the students of class first and second. Now they will speak about how they have dressed and tell us about Kanajur. कौन है ये? कान्हा जी. Thank you. Clapping for कान्हा जी. Good morning, my name is Neil. For I thank you. Good morning. When you are for class LKG Gary. Good morning. My name is Bhavani from class LKG. Today I'm in Radhika. Today's bhajan. छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे सोनेरो मदन गोपाल घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल छोटे से मेरो मदन गोपाल. Thank you. Good morning. My name is Deepta from Ramayenge तो अंगना सजाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी. Thank you. Raise your hands and clap
छोटे छोटा सा छोटा सा मेरे मदन को पास घास खाई गैया दूध पिए हुआ छोटा सा मेरो मदन को पास थैंक यू Good morning, my name is Kavya from class LKG. I am a doctor. Today's Bhajan Ram. मैंने तो कन्हैया सजाऊंगी दीपक जला कर दिवाली में बनाऊंगी थैंक यू Good morning, my name is Jonas. मैं एक परी मैं एक जादू करती हूँ थैंक यू Good morning, my name is Aditya from class UKG. Today's poem आज आपको बाबा साहेब के बारे में एक कविता सुनाने वाला हूँ संग्रह से ना घबराए हर मुश्किल को पार लगाए ना है समता भाईचारा यही था उनका नारा शिक्षा का नया दीप जलाया हर मन को जागरूक बनाया समानता को जो पाठ पढ़ाया भारत को नया रूप दिलाया जय भीम जय भारत थैंक यू Good morning, my name is Namadri from class UKGB. मैं हूँ माता रानी मैं मेरे नाम में से मैं एक दुर्गा माता हूँ थैंक यू Good morning, my name is Mukul from class UKG. I am soldier. I love country. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. बहुत सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों के द्वारा। सरमन बोला I request our chairperson sir, respected principal ma'am and secretary sir to please honor the stage. I request all the teachers to please honor the stage and join the students for the wonderful photograph. कौन? Santa Claus। आपको Santa Claus का बेसब्री से इंतजार है। अभी Santa Claus आने वाले हैं आप सबके लिए, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे Santa Claus का। जितनी जोरदार आप तालियां बजाएंगे उतनी जल्दी Santa Claus आएंगे। Ready everyone? Clapping loudly। कहाँ से आएंगे Santa Claus? स्टेज से या आपके पीछे से? देखिए किधर से आएंगे? कहीं से भी आ सकते हैं ना। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे Santa Claus का। Put a great round of applause everyone.
Thank you, Santa Claus. Now proceeding further, today is day 24 of December, celebrated as Tulsi Divas. Mahaprasad Janani Swar Saubhagya Vridhini, small and wise, Tulsi plant is our health prize. On Tulsi Divas, we thank the Tulsi plant for giving us health and positivity. Now I would like to invite Parthi from class 7th B to express and share her views on this auspicious day as Tulsi Divas. Put a huge round of applause for Parthi from class 7th B. Everyone put a great round of applause for Parthi. 25 दिसंबर को जहां दुनिया में कई देशों में क्रिसमस मनाया जाता है, वहीं पिछले कुछ सालों में इस दिन तुलसी दिवस मनाने का चलन है। शुभ प्रभात, मैं बाकी कक्षा 7 की छात्रा आज आप सभी को तुलसी पूजन दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भारतीय संस्कृति अपनी प्राचीन परंपराओं के और आरोहण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तुलसी पूजन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन तुलसी माता की पूजा और आराधना के लिए समर्पित है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधे के रूप में देखा जाता है। आयुर्वेद में तुलसी को अमृत कहा गया है। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा महत्व है, इससे बड़ा पूजनीय माना जाता है। वृद्ध पुराण के अनुसार तुलसी का नाम मात्र एक उच्चारण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। श्री आशाराम जी बापू ने 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाने की प्रेरणा दी। इनका उद्देश्य था इस दिन को वार्षिक त्योहार क्रिसमस के स्थान पर भारतीय परंपराओं के सम्मान के रूप में मनाया जाए। तुलसी पूजन दिवस पर हम सभी समाज में तुलसी के महत्व को समझाना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। आप सभी को तुलसी पूजन की बधाई। आप सभी अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगाएं। धन्यवाद। Thank you, Parthi, for sharing the importance of Tulsi plant to us. Now I would like to invite Anju ma'am to say a few lines on this auspicious day as Tulsi Divas. Welcome, ma'am. With a great round of applause, everyone. जैसा कि पार्थी ने बताया कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। तुलसी पूजन हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष धार्मिक महत्व है। 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है तुलसी पूजन दिवस? क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के बीच हमारी भारतीय परंपराओं को मजबूत करने के लिए इसी दिन को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है, जो पिछले कई दिनों से कई सालों से मनाया जा रहा है। कुछ मंत्र हैं। तुलसी को जल चढ़ाते समय कौन से मंत्र बोलने चाहिए जिससे कि तुलसी प्रसन्न हो और हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करे? महाप्रसाद जननी सर्वं सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। तुलसी त्वं नमोस्तुते। तुलसी तोड़ने का मंत्र, तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं उस समय भी हमें मंत्र बोलने पड़ते हैं। मंत्र बोलने से क्या होता है कि तुलसी माता का जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो मिलता है, साथ ही हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। ओम सुभद्राय नमः। ओम सुप्रभाय नमः। ओम सुभद्राय नमः। ओम सुप्रभाय नमः। तुलसी मंत्र। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। इस मंत्र का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति और ऊर्जा के लिए किया जाता है। तुलसी स्तुति मंत्र। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्वी धर्म्या धर्मान
देवी देवी देव मन है प्रिया लगते सूतरा भक्ति मंदिर विष्णु परम लभेत तुलसी गुरु महालक्ष्मी पद्मनी श्री हरि प्रिया पद्मनी श्री हरि प्रिया। थैंक यू मैम। आशा करते हैं माँ तुलसी सदैव अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखे और हम सबकी सेहत अच्छी रखे। Proceeding further, now I would like to invite the participants, the winners of the dictation competition that was held on 20th December 2025 on Saturday, that is Hindi dictation competition. I want to invite the participants with their respective class teachers to please come and receive their prize from class LKG A. Nishu, Jianshi Chaudhary, Harsh. I request their class teacher to be present with their students and come on the stage and take their winning prize. Nishu, Jianshi Chaudhary, Harsh from class LKGA. Welcome them. Welcome them with a great round of applause, everyone. I request all the class teachers to be with their students. I am repeating the name of class LKGA students. LKGA student Nishu, Jianshi Chaudhary, Harsh from class LKG B, Jia, Ishika Sharma and Akshara. Welcome them everyone, welcome them with a great round of applause. First position got by Jia, second is Ishika Sharma and third is Akshara. From class UKGA, first position Purvi, second is Sonia and third is Antim. I request their class teacher to be with their students and receive the winning prize. From class UKGB, Drishti, Priya, first position is Drishti, second is Priya and third is Yuvan. Putting the students. First is Purvi, second is Sonia and third is Antim. Clapping everyone, आप सबको जोरदार तालियां बजानी है इन बच्चों के लिए। Sunita ma'am is their class teacher. I request ma'am to please order the students with the medals. UKG class UKG B, first position Drishti, second position Priyam, third position is Yuvan. With their class teacher Sunita Nair ma'am. Next class be ready, that is first position held by Sakshi, second position Ayansh and third position Mati. Clapping for them everyone. I request class teacher to be with their students on the stage. First position Sakshi, second Ayansh and third is Mati. So, Sonia ma'am, please be with their students. From class first B, first position Riya, second position Pragya, and third position Tanmay. I request class teacher of first B be with their students on the stage.
है बेटा तो Class second B. सचिन सर का है फोन Tejasvi and third is Priya. Put a great round of applause for the students of class second B, everyone. Class second B, first position Naina, second position Tejasvi, and third is Priya. आगे स्क्रीन लगी उसमें आपको क्या जाता These students are led by our respected Sanya ma'am. Now I request the students of class third to be present on the stage. First मैं तो पूरा press position कर रहा got by है, तब Prachi, second position got by Prince, and third is Naksh. From class third, first position got by Prachi, second is Prince, and third is Naksh. I request Anirudh sir to be present with their students and to give the medal. I request our honorable principal ma'am and chairperson sir to be please present with these students and from class 4A, first position got by Masri, second is Yuvraj, and third is Bhavika. Clapping for these wonderful students, first position got by Mansi, second is Yuvraj, and third is Bhavika. क्यों Put a great round of applause for these wonderful students, those who have performed in the Hindi dictation competition held on 20th December 2025. कोई ना तुम कर From class 4B, first position is Bhavika, second is Shruti, and third is Kanish Nani. First position Bhavika, second is Shruti, and third is Kanish Nani. दिखा दे टाइम After class 4B, students of class 5th class should be ready. From class 5th A, first position got by Rakshita, second is Bhavishya, and third is Mansi. Class 5th A, first position Rakshita, second is Bhavishya, and third is Mansi. From class 5th B, first position got by Nimit, second is Jyoti, and third is Diya. और चौथा मैच Class 5B, first position is Nimit, second position is Jyoti, and third is Diya. I request their respective class teachers to be present with their students on the stage राकेश सर and honor them with their winning prize. बोलेंगे मंडे में बोला लेकिन उस दिन तो बोले कि अब तो मेरा पूछा हुआ नहीं है ट्यूसडे को मैं पूछ के ना लेके जाऊंगा फिर ट्यूसडे बोले यार मैं भूल गया वेडनेसडे को जाऊंगा अब वेडनेसडे Put a great round of applause for these wonderful students, those who have performed in the Hindi dictation competition that was held on 20th December. I request Rakesh sir to come on the stage and honor the students of class 5B. First position is Nimit, second is Jyoti, and third is Divya. आगे लगे Now, next. पूरी बैठे जोरदार तालियां बजती रहनी बजे मार कर। बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत शानदार बजे मार कर। प्रदर्शन किया अपना हिंदी डिक्टेशन कंपटीशन में। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुनने, समझने और लिखने की क्षमता को बढ़ाना था। सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमें आप सभी पर गर्व है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब मैं जो हमारा लास्ट वीक इंग्लिश डिक्टेशन कंपटीशन हुआ था उनके विनर्स को जाना चाहूंगी। लास्ट वीक नर्सरी में हमारा एक हैंडराइटिंग कंपटीशन हुआ था जिसके विनर्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट पोजीशन गॉट बाय साक्षी, सेकंड मयंक एंड थर्ड इज धोविक। Put a great round of applause for these wonderful kids everyone. इन्होंने बहुत अच्छी राइटिंग से अपनी पोजीशन प्राप्त की है। फर्स्ट पोजीशन इज फॉर साक्षी एंड सेकंड इज मयंक, थर्ड पोजीशन गॉट बाय धोविक। क्लैपिंग करो आप सभी। रन हो जाओ मैंने एक की भेज लेंगे जो इंडिया नाड़ बना टॉपिक से दे कंप्यूटर Last week, an English dictation competition was held in our school campus, and the winners of these classes from LKG to 5th class are as follows. From class LKG A, first position got by Nishu, second position got by Harsh, and third is Nivan Chaudhary. The winners of class LKG A for the English receiving the prize, UKG A class teacher will be their students. First position got by Tanvi, second is Kavya, and third is Harshita. Class UKG A, Tanvi first position, second is Kavya, and third position got by Harshita. From class UKG B, first position got by Vanshika, third is Namasri, and second is Namasri, and third is Navya. First position got by Vanshika, third is Namasri, and second is Namasri, and third is Navya. Class UKGB class teacher be present with their students to receive the medals on the stage. From class first A, first position got by Prince, second position Sakshi, and third is Pratik. From class first A, first position Prince, second position Sakshi, and third position Pratik. Everybody put a great round of applause for these wonderful students who have participated in the English dictation competition that was held last week. From class first B, first position Ritu, second position Tanish, third position is Khushi. उनका मुंह से लेके न्यू खींचते वो नहीं और बट रंग सब है ऐसे नहीं पहन तो फिर ऐसा दिखा From class first B, first position is Ritu, second is Tanish, third is Khushi. जोरदार तालियों से स्वागत करिए इन सभी क्लिक बच्चों करता हूँ का। फोटो है From class second B, first position is Priya, second is Amana, and third is Nitika. Put a great round of applause for the class second B students. First position Priya, second is Amana, and third is Nitika. हाँ ना Class second A, first position Rishika, second is Yaksh, and third is Disha. मैं करूँ एक दो From class third, first position is Prachi, second is Riya, and third is Gitika. From class third, first position is Prachi, second is Riya, and third is Gitika. Class fourth A students, first position got by Nancy, second is Yashurao, and third is Yuvraj. हाँ मैं फोटो एक भी नहीं खींची मैं तो एक भी नहीं खींची Class fourth B, first position Himanshi, second is Priya, and third is Duran. सच्ची
sir. First position is Manshi, second is Priya, and third is Lord. Class 5th A, first position is Manan Jangir, second is Yogesh, and third is Bhavishya. First position Manan Jangir, second is Yogesh, and third is Bhavishya. Class 5th B, first position Mansi, second position is Jyoti, and third is Mimik. Class 5th B, first position Mansi, second position is Jyoti, and third is Nimit. देख सीताराम सर देखो सब नजर होते हैं सीताराम सर As of 19 December 2025, an inter-house debate competition goes well in our school campus. All the students from all the four houses gave their excellent performance with their valuable words. We would like to congratulate all the participants for this remarkable and insightful arguments. We are pleased to announce the winners of the debate competition who have truly showcased excellence in their oratory and critical thinking. We request our honorable Chairman sir and respected principal ma'am, Sitaram sir, Bhavani sir, Samta ma'am and Piyush ma'am to please honor the students with their winning prize. And the winners of this competition are first position got by Karthik. First position got by Karthik from class 9th Air Force House. आप सभी की तालियां जोरदार बजनी चाहिए इन बच्चों के लिए. Second position Tarun Dera from class 9th from Navy House, and third position got by Achal Rathod from class 12th Arts from the Army House. ठंडी हो चल रही भाई जोरदार तालियां बजाइए इन बच्चों के लिए. विजेता विद्यार्थियों को उनकी मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है. हम सभी विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी तरह मेहनत करते रहने के लिए शुभकामनाएं देते हैं. आप सभी ने दिखाया है कि अच्छी सुनवाई, अच्छा बोलना महत्वपूर्ण होता है. Achal Rathod from class 12 Arts from the Army House, please come on the stage and receive their prize. आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें इन बच्चों का जिन्होंने इतना सुंदर वाद विवाद प्रतियोगिता में अपना बहुत बेहतर प्रदर्शन दिया. जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाएं सभी. Put a great round of applause, class. वीडियो कैसे चल रही है देख लिया आगे आगे कट कर देना क्लिप कर देना मैं खुद भी किया था नहीं दीदी खड़े हो जाओ. Now it's time for class 1st and 6th students. Let us give a warm welcome to our lovely students and get ready to enjoy their cheerful performance on the song Aaj Main Upar. Their energy and smiles are sure to fill the stage with the joy. Please put your hands together and encourage our youngsters of class 1st to show their performance on the song Aaj Main Upar. Put a great round of applause, students. अगर आपको ये परफॉर्मेंस देखना है बहुत जोरदार तालियां बजानी होगी जिससे इन बच्चों का एंकरेजमेंट
Clapping everyone, clapping and cheer them loudly. जोरदार तालियां बजनी देनी चाहिए रमेश की तरफ से। Wow, what a wonderful performance by the students of class first. बहुत सुंदर प्रस्तुति। जोरदार तालियां बजाइए बच्चों के
Enjoy their marvelous performance. बहुत सुंदर परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस के साथ जोरदार तालियां तो सभी की तरफ से बनती है। आप सभी ने खूब एंजॉय किया है बम बम बोले सॉन्ग को, जिसको क्लास 3 ने प्रस्तुत किया है आप सभी के सामने। Enjoy their performance. And the mountains every part
of all, I would like to wish you all Merry Christmas. थैंक यू सर. आज मैं आपके सामने एक पुराना सॉन्ग लेके आया हूँ जो मेरे महागुरु किशोर कुमार जी ने गाया है, तो मैं भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. जग में जब रहे हम देखे न सुने तो कहता के फूल को हम सुने. जग में जब रहे हम देखे न सुने तो कहता के सब दुनिया बेगानी दौलत में और की जादू तेरा दिल जादू तेरा दिल अपनी नस्ती में कोई
में हम पे ना चल जाए Thank you. जोरदार तालियां जरूर बनती हैं। जोरदार तालियां बजाइए सर के इतने सुंदर गाने के लिए। और क्या बात है सर, इतनी सुंदर प्रस्तुति के साथ हम आगे बढ़ते हैं और संजय मिश्रा सर को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी अच्छी क्रिसमस सेलिब्रेशन के डेकोरेशन में जो सर एक हफ्ते से मेहनत कर रहे हैं, आज सबके सामने इतना सुंदर प्रदर्शन किया है क्रिसमस का। जोरदार तालियों से स्वागत करिए संजय मिश्रा सर का। और मैं हमारे आदरणीय चेयरमैन सर का स्वागत करते हैं स्टेज पर, जो संजय मिश्रा सर को सम्मानित करेंगे उन्हें सुंदर कार्य के लिए, जिन्होंने हमारे स्कूल को इतना सुंदर सजाया है क्रिसमस के उपलक्ष्य में। Interested.